Welcome. Today we will revise and recapitulate 12th class syllabus for board exams. Hope you all have prepared for this and let us revise together so that we can learn better for upcoming exams. All the best for your board exams. So let us start with 12th class board pattern and then we will revise section wise syllabus of our board exams. Okay, let us start with. So class 12th. So dear students, as we all aware about the date sheet of the board exams, and as you have tomorrow your pre-board exam for your class 12th English exam, so we all must prepare for this upcoming exam, and we all have a basic learning of pattern with marks distribution so that we can go for good marks scoring in exams. So let us start with English. Total weightage of the numbers that we have in board exams. So total marks 80. Right? So these 80 marks have been divided into three main sections of your board pattern. One is section A, that is reading skill. Then we have section B, that is writing skill and grammar. And then beta we have section C, that is literature part. So first we will bifurcate the numbers in these three sections and then one by one we will discuss each and every question of the board pattern examination. So reading skill is of 20 marks. Then we have writing skill and grammar part, we have again 30 marks for this. And then we have literature part, again is of 30 marks. 30, 30 and 20, that is 80. Total we have 80 marks. So I hope and I am sure that you people are well aware of the marks division of these section wise distribution of board exams. So now let us learn one by one and question wise distribution of marks. So let us begin with note making and section A, that is reading skill or reading comprehension, right? So beta, reading comprehension is of, it includes two questions. One is first question is note making and other question is comprehension paragraph. So let us learn and revise about the format and the marks distribution in these two questions. So let us begin with first question. Question number 1 in your board exam is on note making. So beta, this question note making includes three parts, that is a whole question is of 10 marks. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा 10 मार्क्स का आएगा आपके पास. But how will you get or score 10 marks out of 10? So we have to make some reasonable answering here. So first is
you have to write note making. Note making is of 5 marks. Then you have summary, that is of 4 marks. And this summary include a title, that is of 1 marks. So if we want to get 10 out of 10 in this first question, that is note making, we have to divide our answer in 3 main parts. One is note making, then is summary, writing summary, and third is title for the passage. So the format for this, we have a long comprehension paragraph of about 400 words for note making. Any paragraph can be given in your board exam. You have to write notes on it. And what is the format for writing notes? What are the main particular things that we can ignore while writing the note making? That we must not write complete paragraph or complete sentences. We have to make information to the point. We have to precise the information in the sense that reader can learn or can identify the information from through the notes only. We don't have to go through long piece of writings. So we have to make headings and subheadings or titles or subtitles for the paragraph. So बेटा जब आपके 400 word का paragraph आपके पास आता है, you have to divide this 400 word paragraph into titles and then subtitles. One is we have to make 4 main headings. For this note making, we have to make minimum. I am asking here minimum. We have to make here minimum 4 main headings of the paragraph, and then we have to divide these main headings into subheadings. For example, our first point is a main heading, then it includes 1.1, then we can divide it 1.2, 1.3 and 1.4 minimum. Maximum you can write 5 or 6 points in that. But while writing these sub points, we have to keep in mind writing abbreviations. We have to use abbreviations or short forms of the word that is using again and again in the paragraphs. We have to make short forms. For example, we are using WHO या इम्पोर्टेंट के लिए हम IMP लिखते हैं, तो जो भी आपको वर्ड लग रहा है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है और इसका हमें कंप्यूटर के लिए COMP हम लिखते हैं, तो आपने एब्रीविएशंस भी बनानी है इसकी. So minimum you have to make titles first, headings, and then you have to divide information into subheadings. But while writing the subheadings or subtitles, you must not write the complete sentence. You can ignore or you can omit tenses, I can say prepositions. इन सब की लिखने की जरूरत नहीं है. You have to give only words that can reflect your information of the paragraph. But information must be informative so that any reader can understand about the paragraph theme or the information given in the paragraph. Hopefully that you people have aware about this, right? तो बेटा ये आपका हो जाएगा note making. Similarly, we have subtitles for second point, 2.2, 2.3, 2.4 and 2.5 if it is necessary. Then similarly for 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, similar for 4. So keep in mind, for writing all this note making, you have to frame minimum 4 main headings and then you have to divide this information into subtitles. Each point or each heading, you can divide it into subtitles or subheadings like 1.1, 1.2, 1. You can write it up to 4 or 5. So for this, if you have done this, including your abbreviation, you can score 5 marks for this. इस इंफॉर्मेशन के लिए बेटा आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. 10 में से आप सिर्फ 5 ही ले पाएंगे अगर आपने इतना किया है. Then what is next for this? Then we have to write summary for all the note making we have done earlier. सारी इंफॉर्मेशन जो आपने ऊपर नोट मेकिंग में बनाई है, you have to write this summary in 80 words.
आपने एक पैराग्राफ लिखना है. कीप इन माइंड यू मस्ट नॉट राइट 2 or 3 or 4 पैराग्राफ्स फॉर समरी और लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग की 200-250 वर्ड में आपने समरी कर दी इसकी. नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. समरी मीन्स यू हैव टू समराइज द होल इंफॉर्मेशन इनटू 80 वर्ड्स ओनली. तो आप इसको जितनी भी इंफॉर्मेशन, बिकॉज दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव ऑलरेडी excluded from that paragraph. So what you have to do next, you have to write, you have to do or summarize the paragraph in 80 words. 400 word के पैराग्राफ को बेटा आपने शॉर्ट और कट शॉर्ट करके पैराग्राफ फॉर्म में, सिंगल पैराग्राफ फॉर्म में आपने 80 वर्ड्स में लिखना है. और अगर आप वो उसको प्रॉपरली कर पाते हैं देन यू विल गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ दिस. तो आपके ये 4 नंबर आपको मिल जाएंगे. देन यू हैव टू सेट अ टाइटल फॉर दैट पैराग्राफ. समरी के लिए आपने एक पैराग्राफ देना है. समरी के टाइटल में आप उसको लिखेंगे टाइटल, यू कैन अंडरलाइन दैट एंड देन यू विल गिव informative title, impressive, so that reader have generate some interest in the paragraph or note making. तो बेटा वो related होना चाहिए आपके टॉपिक के साथ. then you will score 1 marks and it is mandatory for writing this information. तो आपकी नोट मेकिंग की मार्क्स डिवीजन इस तरह से होती है. 1 is complete of 10 marks, then note making is of 5 marks, summary is of 5 marks, so sorry 4 marks and title is of 1 marks. तो अगर आप इतना कर लेते हैं पूरा, then I'm sure you are able to get 10 out of 10 in note making. अब आपके 10 में से 10 note making में आएंगे. But make sure you must do much practice of this so that कि आपकी learning जो है ये fruitful रहे, right? So let us go for question number 2. Again, in question number 2 of section 1 or section A, reading comprehension, you will get second question on comprehension paragraph again. But again, you will get 400 words, long paragraph, follows by 10 question. Second question में आपका you will get a long 400 word again paragraph question that is followed by 10 1 marks questions. You have to read the paragraph again and again up to 1 to 2 reading you must into it, and then you have to underline or you have to relearn the important information given in the paragraph, and then according to question you have to answer the questions that follow that paragraph. तो 1 into 10 मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ में से मिलेगा, बट आपकी रीडिंग स्किल मैटर करेगी. How well you read the paragraph and understand it well, then you are able to write the answer only, right? Hopefully we are able to do this section and score 20 out of 20. तो अगर आप बेटा आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 20 में से 20 नंबर मिल सकते हैं. Then we will go for question section B of your board paper, that is writing skill and comprehension. So let us revise. Section B, writing थर्टी मार्क्स. बेटा आपकी राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपके पेपर में आता है दैट इज ऑफ 30 मार्क्स. प्लीज बी प्रिसाइज विद योर बोर्ड पैटर्न ओनली. आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा लर्निंग की जरूरत नहीं है. आप प्लीज अपने बोर्ड सिलेबस को चेक करें, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें सो दैट यू कैन स्कोर well or good marks in your board exams. So in your board paper question number 3 in writing skills is of advertisement. Then we have option
or invitation or reply to invitation. दिस क्वेश्चन नंबर 3, आपको बेटा 3 टॉपिक्स में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना होगा, बट वी आर नॉट श्योर कि ऑप्शन में आपको क्या मिल सकता है. यू विल गेट क्वेश्चन ऑन एडवर्टीजमेंट, ऑन इन्विटेशन और इन्विटेशन टू रिप्लाई. I will discuss the format. You can revise it, you can learn it and go for it. It scores 4 marks. 4 marks का आपके बोर्ड पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, जिसमें आपकी एडवर्टीजमेंट आती है. Then we have to learn about invitations and reply to invitations. What is question number 3? Advertisement. But in exams, we have to write classified advertisements. We have 2 types of advertisement. One is commercial advertisement and other is classified. तो पेपर में जो हमने तैयारी करनी है, that is of classified advertisements. टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स क्या हो सकते हैं जहां से हमें एडवर्टीजमेंट आ सकती है? One is situation vacant. Second can be missing. Third can be lost or found. Fourth is matrimonial. Fifth is obituary. किसी की डेथ के बारे में हम इन्फॉर्म करते हैं. These 5 can be the types or areas from on which we have to write advertisement. इन 5 टॉपिक्स के ऊपर में से कहीं से भी हमें एडिशनल भी है. There can be some additional options we have like sale and purchase, to let, rent, tourist tour and travels. तो उस पर भी हमारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, बट ये भी मेन है हमारा सिचुएशन वेकेंट, मिसिंग, लॉस्ट एंड फाउंड, मैट्रिमोनियल, ऑब्ituary. इन 5 में से आप कोई भी तैयार करें विद प्रॉपर फॉर्मेट आपका सही रहना चाहिए. वर्ड लिमिट इसकी बेटा रहेगी एडवर्टीजमेंट की, दैट इज 50 वर्ड्स. मार्क्स इसके रहते हैं 4. यू हैव टू गेट 4 मार्क्स इफ यू राइट इट इन प्रॉपर फॉर्मेट. तो आप प्लीज इसको एक बार प्रैक्टिस देख लें. सिचुएशन वेकेंट के लिए किसी के लिए जॉब रिक्वायर है, देन मिसिंग रिपोर्ट लिखा रहे हैं आप, कोई पेट मिस हो गया है या फैमिली मेंबर, you have to give the advertisement in the newspaper or magazine. Then lost and found, then we have matrimonial and obituary, sale and purchase, again we have to let and other more options are there. So now let us go for the format. सबसे पहले बेटे आपने लिखना है टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट. देन फॉर एग्जांपल आपकी एडवर्टीजमेंट सिचुएशन वेकेंट की है, तो जहां पे मैंने टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट लिखा है, यहाँ पे आप लिखेंगे सिचुएशन वेकेंट. या यहाँ पे अगर ये मिसिंग की है तो आप इसकी जगह मिसिंग लिख सकते हैं. अगर ये मैट्रिमोनियल है तो आप इसकी जगह मैट्रिमोनियल लिख सकते हैं. एनी ऑप्शन दैट यू गिव इन द क्वेश्चन, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट आंसर अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर. आप अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यू हैव टू राइट आंसर ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू राइट एडवर्टीजमेंट. तो टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट सबसे पहले आएगा. देन हियर इज अ बॉडी. यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशन हेयर डायरेक्टली. आप डायरेक्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं किस के रिलेटेड आप अपनी एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं. देन यू हैव टू राइट
name, phone number, address here, and then you have to box it. आप इस सारी इंफॉर्मेशन को बॉक्स करेंगे. तो अगर आप एडवर्टीजमेंट इसी फॉर्मेट पे करेंगे देन यू विल स्कोर 4 मार्क्स. आपके 4 मार्क्स बेटा आ जाएंगे. तो प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ दिस सो दैट यू कैन गेट 4 out of 4. राइट. नेक्स्ट वी हैव इनविटेशन एंड रिप्लाई. ये इसके ऑप्शन में आएगा. आइदर यू गेट क्वेश्चन ऑन एडवर्टीजमेंट और में इनविटेशन आ सकता है या रिप्लाई आ सकता है. तो आप दैट इज योर चॉइस. आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर में. राइट. Invitation, again we are of two type. One is formal invitation, second is informal invitation. Formal invitation and informal invitation. Let us learn about the invitation format. Let us have a brief discussion on that, and then about the this replies, and we will go further. Formal invitation, beta. For example, I am writing here, St. Peter's School invites you So for invitation you have to give complete details. आपने उनको invite करना है. You have to give name and then you have to inform about the place or the occasion that you are going to be invited for the person who will be the chief guest. Date, time, venue should be there. Your language should be polite and formal, and also about the information, who is going to share this information. You can get information from the, आप information बेटा उठाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर से. According to question paper you will write the answers, right? Then we have informal invitation. Write informal invitation in letter form. लेटर फॉर्म में आप इसको लिखेंगे. आप किसी को भी अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं तो एक लेटर फॉर्म में आप उसको लिखें. लाइक वी हैव सेंडर्स एड्रेस हियर, देन डेट, receiver's address, body,
and then closing. It is again of 4 marks. ये भी आपका 4 marks में जाएगा. Okay. Then you have reply to invitation. You have to mention your inability to or your ability to visit this place. Then you can reply it in the same form. Either if you are going for formal reply, you have to add subject in that. अगर आप इसमें formal में जा रहे हैं बेटा तो आपको इसमें subject add करना है. अगर आप formal में नहीं जा रहे तो आप इसको subject को omit कर सकते हैं, right? Then we have question number 4 in our board exam, that is letter writing. Six marks की letter writing आती है आपके board exam में. You have 6 marks for letter writing. Again, we have two types of letter. One is formal letter and second is informal letter. Format must be correct. You will get marks for proper format. Format पे proper ध्यान दें बेटे. First, for formal letter, write sender's address, then date, you have to write proper format for this. Sender's address on the top, that is given in the question paper. If it is not there, you can write examination hall also. Then write down the date, then write down receiver's address in proper format with in good handwriting also, and then about the subject. Then go for your content or body of the letter. You must write it in 3 paragraphs and then closing. बेटा ये इसकी जो word limit रहेगी, that is 100 to 120 words, and you will get 6 marks for it. 6 marks इसमें आपके कंटेंट के भी 3 नंबर आते हैं और आपके फॉर्मेट के भी अलग से 3 नंबर रहेंगे या 2.5 नंबर रहेंगे. यू हैव टू गो फॉर द प्रॉपर फॉर्मेट फॉर राइटिंग लेटर्स. बोल्ड करके लिखें, प्रॉपर लिखें, अपने टाइटल्स को अंडरलाइन करें सो दैट योर एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव राइटन वेल इन अ गुड हैंडराइटिंग. देन लेटर्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द टाइप्स ऑफ लेटर्स? One is official letter. There can be any type of letter can be asked for your examiner or in your question paper. You have to go according to your practice. Beta, either it is from business letter, maybe it is a type that is given in the question paper, or it is formal letter on official, like you have to ask for documents or admission information from a school or university. That is, you have to write letter to editor, letter to editor,
and then there can be a complaint letter. Any letter can be given in your question paper. You have to write answer accordingly, but please go for the proper formats and content of the letter. For this you will score 6 marks. तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पेपर में, दैट इज ऑन letter writing. So I will help you to know about the marking scheme of this. Address 1 marks, salutation 1 marks, then body of this letter may be 3 marks, and closing 1 marks. This is the marking scheme for writing. You will get 6 marks. How can you score 6 marks out of 6? So 1 marks is of writing address, 1 is marks is of writing salutation, either respected sir, ma'am, or the that is given in the question paper. Body is of 3 marks in 3 paragraphs, and last is closing. Closing is of 1 marks. तो बेटा ये इस तरह से आपके 6 नंबर डिवाइड रहते हैं, एक एड्रेस के लिए, दूसरा सैल्यूटेशन के लिए, तीसरा आपकी बॉडी के लिए, एंड राइट इज क्लोजिंग. क्लोजिंग इज ऑफ 1 मार्क्स. तो इस तरह से आप यू कैन गेट 6 out of 6 in letter writing. You can go practice for this, and I wish you can score good marks in writing skills. Okay, so next we have our question on resume along with I can say that students have doubt in writing job application. Beta, in your board exam, it scores 6 marks. Please keep note on that. It is of 6 marks. One is job application, cover letter, and second is your resume. Cover letter or resume or your biodata. Most of the time, students find it or maybe not aware about the thing that this question is divided into 2 main parts, or this question will get you numbers only on the basics that if you write cover letter separately and resume. Beta, this is of 2 marks only, and this is of 4 marks. We have found in your previous exams of pre-board what students did a mistake in their exams. They only write a letter with a very short addition of resume attached to that. But that is a wrong format, because you are getting 4 marks for writing resume and only 2 marks for writing cover letter. So kindly pay attention to this. While you are going to attempt this question number 5 for your board exams, you must write cover letter for 2 marks only, and additional to it you can attach or you can write resume or biodata for 4 marks. अगर आप ये दोनों लिखेंगे तो ही आपके 6 नंबर आएंगे, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर टीचर टू गिव यू 6 marks फॉर this exam. So cover letter का format क्या है, I'll going to discuss with you, and आपके resume का format क्या है, I'm going to discuss it with you, right?
Beta, for writing this cover letter, you have to add your information that is given in the question paper for the post application. आप लिख सकते हैं subject में application for the post of English teacher. जो आपके question में given information है, according to that you have to write answer. But your format should be very proper. And the first paragraph you can give a your division of paragraphs in this also. तो first paragraph आपका जो रहेगा that is about the information you are getting from. आपने इस post के लिए information कहाँ से, किस newspaper से देखी थी, advertisement number with date with detail and time. तो वो डे डिटेल का जो इंफॉर्मेशन है न्यूज़पेपर के नाम के साथ आप उसमें लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, for example, English teacher given in the dash newspaper on 7th Feb, Thursday or Wednesday. Now you find yourself is the candidate presentable for the place for the post, and then in the next paragraph you can share your qualification. आप उसमें qualification और experience share करें अपना बेटा, और third में आप उनको बता सकते हैं कि आप कैसे इस post के लिए एक genuine candidate अपने आप को समझते हैं. Then your letter will be कंप्लीट. तो आपकी लेटर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है अगर आप इसको इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन को डिटेल में शेयर करें. देन एडिशन टू दैट यू हैव टू राइट एनक्लोजर्स रेज्यूमे. आपने इसमें रेज्यूमे ऐड करना है और बायोडेटा. What is resume and biodata is basically a life experience and qualification of a candidate. किसी का भी जो life experiences वो job के through लेते हैं और जो उनका एक qualification रहता है, higher qualification और best qualification जो भी उन्होंने achieve किया है उस post के लिए, you have to write that. तो basically we have to give information in main 4 forms. One is personal detail. Second is your qualification. Third is your experience. Fourth is your references. And then you have to give declaration. तो बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन आपने रेज्यूमे में ऐड करनी है. पर्सनल डिटेल में यू कैन राइट फॉर पर्सनल डिटेल you can write name, father's name, then age, email, address, etc. तो ये इंफॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल डिटेल की आएगी ये आप फर्स्ट में लिखें. देन यू हैव टू गिव क्वालिफिकेशन. यू हैव टू मेक बॉक्स आउट ऑफ दैट. आप इसमें एक बॉक्स बना सकते हैं जिसमें आप हायर क्वालिफिकेशन से लोअर क्वालिफिकेशन की तरफ आएंगे. फॉर एग्जांपल यू आर मास्टर्स इन इंग्लिश और यू आर मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट, यू आर एन MBA. आपने कोई और हायर क्वालिफिकेशन ली है तो हायर क्वालिफिकेशन से आप जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है वहां तक आप इसको अप्रोच करें. एंड देन यू कैन गिव योर मार्क्स डिटेल्स एंड आल्सो परसेंटेज एंड नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ और कॉलेज. तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. देन एक्सपीरियंस कितना है आपके पास, एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है. कई बार बच्चों के पास डिप्लोमास होते हैं. यू कैन ऐड दिस इन अगेन. एंड ऑल्सो यू कैन राइट अबाउट द references, about your hobbies, your language known, your marital status. You all have to write in this. तो बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें ऐड करेंगे और लास्ट में एक डिक्लेरेशन लिखेंगे. दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट अबव गिवन इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू माय नॉलेज. तो अगर आप ये प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर डिटेल्स के साथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
information share करते हैं, then you are able to get 4 marks out of this, because this is of 6 marks, 2 marks is for cover letter and again I am asking 4 marks is for writing resume. तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने एप्लीकेशन लिख दी है तो बस वही resume हो गया, बेसिकली वो resume नहीं होता. You have to attach additional information with your cover letter so that your teacher can score your marks. So please आप जब भी इसको अटेम्प्ट करें तो कवर लेटर के साथ साथ रेज्यूमे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें, सो दैट हम आपको मार्क्स दे पाए या जो भी आपके पेपर चेक करेंगे वो आपको नंबर इसमें दे सकें, राइट? देन बेटा you have question number 6 on one out of two compositions on article, debate, speech or humorous writing. तो इनमें से कोई भी दो टॉपिक आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम के लिए. मे बी आर्टिकल और डिबेट में चॉइस आए, स्पीच और डिबेट में आ सकती है, डिबेट और यू कैन हैव पर्सनल नरेटिव या पर्सनल प्रोफाइल, ह्यूमरस राइटिंग, एनी क्वेश्चन कैन बी ऑन एनी टॉपिक. बट बेटा वर्ड लिमिट फॉर दिस इज मिनिमम 180 वर्ड्स. काइंडली बेटा प्लीज गो फॉर प्रॉपर वर्ड लिमिट्स. आप लोग कई बार पेपर अटेम्प्ट करते हैं, वर्ड लिमिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, बिकॉज दिस इज ऑफ 6 मार्क्स क्वेश्चन एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर योर examiner to evaluate the question for 6 marks because the word limit is quite very less or very much. So accordingly you have to write your answer in 180 words with proper format. Article का format देख सकते हैं, debate for the motion or against the motion with greetings, you have to start that and you have to disclose the topic, and then either if you are for the motion you have to write फिजिकल एजुकेशन की नहीं होगी मैम. बेटा you will be informed in your class group about the class, right? You will be informed. Similarly then you have to write speech with greetings, first paragraph, then you have to introduce the topic, and then you have to write your information. Go for personal narrative or humorous writing, but please mind the word limits. Word limits को ध्यान में रखें, proper format के साथ आप इसको शुरू करें ताकि आपको पूरे नंबर हम दे पाए, right? 6 out of 6 you can score. Now let us come to the last question of this this section, that is editing the paragraph. I am here to divide the इंफॉर्मेशन कि आपने कहा कौन से एरिया ऑफ ग्रामर से मोस्टली आपको क्वेश्चन जो आएंगे, दैट इज गिवन इन योर सिलेबस. तो आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार करें एडिटिंग के लिए. बेटा 8 मार्क्स का आपका एडिटिंग रहता है. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज एडिटिंग द पैराग्राफ. You will be given with a paragraph and in that you have to make corrections. आपको उसमें corrections बनानी होती हैं. कौन कौन से एरिया ऑफ ग्रामर से आपकी मिस्टेक्स निकलती हैं, तो प्लीज मेक श्योर. फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
Second is tenses. Third is narration. Fourth is conjunction. Fifth is prepositions. Sixth is change of voice. Seventh is punctuation. So you have to learn according to this editing passages. Okay. So बेटा आपको ग्रामर के कौन से पार्ट से मिस्टेक्स मिल सकती है? दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस आपके बहुत सारे हैं. यू हैव मेनली 14 और 13 to 14 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. तो मोस्टली आपको जो ध्यान देना है दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट. उसमें से गलती आएगी आपकी हिमसेल्फ, हरसेल्फ, जिसमें हम लगाते हैं इटसेल्फ, माईसेल्फ, उसमें ध्यान दें. Then you have relative pronouns, then you have reflective pronouns, emphatic pronouns. तो mostly आप reflexive pronoun पे ध्यान देंगे. Tenses, present, past, future with proper structure and usage. ध्यान रखें पेपर में. Narration, narration की mistake है. Direct indirect जो हम करते हैं उसमें देखें कि उसमें गलती नहीं है. Conjunctions जो जोड़ते हैं words को आपस में and but की गलती हो सकती है. Then you have prepositions. What is preposition? That we place before a noun or help us to understand about the position of the noun in a sentence. तो वो आप इसको go through करें. Voice change की mistake हो सकती है and then punctuation की ज्यादातर mistake रहती है. तो बेटा ये area of grammar है जहाँ पे आपकी mistakes आपको मिल सकती हैं. तो kindly go through it, have patience, read it in a very proper manner so that you can identify mistakes in that. अगर आप इसकी mistakes निकालते हैं, mostly ये 8 parts हैं जहाँ से ये mistakes आती हैं, तो आप इसमें 8 में 8 score करेंगे. This is of 8 marks question. ये question जो आपके पेपर में आएगा that is of 8 marks. So with that we have learned the writing part or writing skill or writing comprehension of your board exam that is of 30 marks. So बेटा हमने 30 मार्क्स का पेपर जो आपका ये फिर से रिवाइज कर दिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद लिटरेचर पार्ट. हमारा लिटरेचर रहता है. आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट आल्सो इन द सेम सेशन. तो आई विश कि आप बच्चे इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दें और अपने मार्क्स को स्कोर करें. राइट. सेक्शन सी, लिटरेचर. So for those students who still are unaware about their books in the 12th class, I am here to revise you that you have 2 books that you have learned in your class 12th. One is Vistas and other is Flamingo. Beta, in this book Flamingo, you are provided with short stories and poems. And this book is for long piece of writing. अभी भी अगर किसी की तैयारी नहीं है, आई एम हेयर टू हेल्प यू एंड एक्सप्लेन यू कि आपकी जो बुक्स हैं विस्टास में से बेटा यू हैव टू प्रिपेयर ओनली लॉन्ग क्वेश्चन. इस बुक में से आपने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और इस बुक में से यू हैव टू प्रिपेयर ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस. आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं. बोर्ड हैड मेड इजी फॉर यू ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और आपको इजी चॉइस मिले पेपर में. तो दैट इज वाई फ्लेमिंगो की पोइट्री हो या शॉर्ट क्वेश्चंस हो वो सिर्फ फ्लेमिंगो में से आएंगे. इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे. विस्टास बुक में खाली आपके लॉन्ग क्वेश्चन है. यू कैन गो ऑन लेक्चर पार्ट. तो इसमें आपका सिर्फ लॉन्ग ही है. सो बोर्ड के पैटर्न की तैयारी अगर हम देखें
Question number 8. Question is based on reference to context, followed by 4 question, 4 marks. बेटा ये पार्ट आपका पोइट्री से आएगा, फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री. You have been given with a stanza and that stanza followed with 4 questions. One question score 1 marks. एक क्वेश्चन के लिए 1 marks आपको मिलेगा. And then you have, that is 1, and question number part second is you have been given with 4 questions. You have to attempt any 2. तो आपकी जो पोइट्री है दैट इज ऑफ 10 मार्क्स कंप्लीटली. इफ आई कैन से आपकी पोइट्री बेटा 10 नंबर की आ रही है पेपर में, जिसमें 4 नंबर आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और स्टेंजा से हैं, जिसमें 1 क्वेश्चन स्कोर्स 1 मार्क्स दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेंजा. एंड सेकंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन इज short question. You have to write answer in 40 to 50 words only. Please mind the word limits. For this you have to write 40 to 50 words and two क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ऑफ 3 मार्क्स. 3 नंबर के आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसके लिए आपको मिलेंगे 6 मार्क्स. राइट, ये आपकी फ्लेमिंगो में से रहेगा. एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सेम बुक यू हैव बीन गिवन विद 5 क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. आपकी बुक में जो चैप्टर्स हैं फ्लेमिंगो में, फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट चैप्टर, द थर्ड लेवल, देन यू हैव, sorry, this is not third level, the last lesson, the lost spring, then you have deep water, rat trap, and you have indigo, poets and pancakes, interview and going places. इनमें से बेटा आपके 5 क्वेश्चन आएंगे. यू हैव टू अटेम्प्ट 3 ओनली एंड दीज 3 स्कोर 3 मार्क्स, दैट इज ऑफ 9 मार्क्स. तो 9 मार्क्स आपके फ्लेमिंगो बुक के प्रोज पार्ट में से आ रहे हैं, 10 मार्क्स आपकी पोइट्री में से आ रहे हैं, एंड दीज स्कोर 19 मार्क्स ओवरऑल. सो आई कैन से योर फ्लेमिंगो बुक कैन गिव यू 19 मार्क्स आउट ऑफ 30. तो ये 30 में से 19 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाते हैं फ्लेमिंगो बुक से. एंड रेस्ट क्वेश्चन नंबर 11 of your book is, sorry, 10 is long answer question. विस्टास बुक में आएगा एक्सेप्ट प्ले. जो आपका प्ले है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 ओनली. ऑन द फेस ऑफ इट आई कैन से सिंगल चैप्टर स्कोर 5 मार्क्स. वर्ड लिमिट इज 120 to 180 वर्ड्स. एक ही चैप्टर में आपके 5 नंबर आ रहे हैं. कोई भी बच्चा इस चैप्टर को स्किप ना करे. विस्टास में ऑन द फेस ऑफ इट इज अ प्ले एंड यू कैन राइट डाउन द करेक्टर और यू कैन से हाउ दिस इज अ ह्यूमर, इंडल्ज अबाउट द सटायर ऑन द सोसाइटी. कुछ भी इस पे आ सकता है बेटा. एक ही चैप्टर को आप प्रिपेयर करेंगे 5 मार्क्स के लिए. वर्ड लिमिट कैन बी 120 to 150 वर्ड्स और 180 वर्ड्स. एंड क्वेश्चन नंबर 10 and question number 10 long answer type question is third level, Tiger King, Journey to the End of the World, Memories of Childhood. इनमें से आपको चॉइस मिलेगी कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की. यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन और 6 मार्क्स. तो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑफ 6 मार्क्स. वर्ड लिमिट इज 180 वर्ड्स, दैट इज ऑफ विस्टास. तो आपकी जो विस्टा बुक है that can help you to give 11 marks. तो 11 मार्क्स आपकी विस्टास बुक में से आ रहे हैं और 19 मार्क्स आपकी फ्लेमिंगो, जिसमें 10 मार्क्स आपकी पोइट्री और 9 मार्क्स आपके प्रोज चैप्टर्स हैं. सो आई विश यू कैन लर्न, यू कैन
Prepare well for your board exams. All the best from my side. If you have any doubt, you can write your doubts and I can help you to recapitulate and make your answers easy for tomorrow paper.